Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are going to start our this, webinar, and I would raise a question that can business thrive or provide services if societies fail? If societies fail, it is very, very difficult for business to survive and thrive in this globe, and which means that the business and societies have a very shared and common goals when we combine together. Like business and societies both try to develop people, and they are supporting strong economies and the communities in our country and alike. Also, business and societies both combined together provide opportunities for people to pursue a livelihood in the society, and also then they both ensure that everyone can live in dignity. Now, when we talk about this common goal between these two business and societies, so United Nations in the early part of the century established this Global Compact program, and this program came in Pakistan in 2005, and we offered this program to almost every organization in the country, and then right now we have 75 companies on our in Pakistan Global Compact Network as a member, and from the United Nations side, this Global Compact Network is established in 162 countries. There are more than 21,000 participants who are involved in this Global Compact program, and this Global Compact program, you have 10 principles. Two belongs to human resources. 4 principles belong to labor rights. 2 human rights, 4 labor rights. 3 with the environment, and 1 is with anti-corruption. Now, today we are going to talk about this principle 6, which says the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. This principle 6, again, it belongs to labor right, and we all understand that if the discrimination exists, we always feel restrictions with the available pool of workers, and it restricts the skills. It is and isolates an employer from the wider communities, especially those employers who practice discrimination in their own organization. And this discrimination can damage the company's reputation, and it does in Pakistani environment, or if even you are in the US or in any developed countries. The discrimination also potentially affects the profits and margin and the growth of the organization. It slows economies. It slows the growth of society as a whole, and then people miss the opportunities to grow in the organization or in the society at large. So this discrimination has its own child, which are basically the children of this discrimination. They play a negative role for the society and for the organization as a whole. So today, under this program, we are having this program every month, and every month we handle one principle at a time, and we request people like you who come to the on this in this webinar, and let the people know, or the participants know their own thinking process, and we get the benefit of their expertise. So today with us is Madam 𝗂𝗵𝗀𝗀𝗀𝗀. She is the Deputy General Manager, SHR, Interloop Limited. She holds a master's degree in psychology and she is a certified human resource professional. Ma'am 𝗂𝗵𝗀𝗀𝗀𝗀 has extensive experience of over 20 years in the area of research, psychometrics, counseling, psychotherapy, and teaching and human capital management and development. And also with us is Madam Mehak Masood. She is the head of sustainability and ESG
at Artistic Millionaires. She is environmentalist, sustainability and climate change scientist. Not only as a professional, but by a core of her heart, she has achieved these activities and these remarkable achievements. She received Australia's award scholarship in 2018, cohort from Pakistan, and completed her Master of Environment with Climate Change and Business Sustainability and Governance stream at the University of Melbourne. Her grandfather and father were environmentalists. So it seemed that she received, these kind of things are in her genes. She completed her BSc honors in environmental sciences and in environmental sciences at Kinnaird College for Women in Lahore, Pakistan. Very good and very impressive so far of the both resumes, seems to me. Mr. Atif Sheikh is Executive Director, Special Talent Exchange Program, STEP. He is Senior Disability Inclusive Development Advisor with over 20 years of experience of providing training and advocacy. Currently serves as the Executive Director of the Special Talent Exchange Program, STEP, which mainstreams disabled people in society, serve PPAF, Pakistan Poverty Alleviation Fund, as advisor in addition to undertake assignment with UNESCAP, UNDP, World Bank, Oxford Policy Management, DAI-IFES, Light for the World, Sight Savers, and Asia Pacific Development Counter for Disability. So, so far, very good and expressive people. I must admit, I'm talking to stalwart people, and please pardon me if I get confused while sitting with the people and legendary people in the area, like you. So I may goof up, I may get confused, I may get shy, but please excuse me for that one. So having said these words, can we start now by just throwing one question that this principle, elimination of discrimination in respect of employment and occupation, what do you think, what does this principle mean to you as a business leader or a corporate executive? This question is to all three. So kindly you start one by one. So can I request Ma'am Alia Kashmiri to please to start and reply this question? Okay, thank you, Akram sir. Thank you for the introduction, and I'm sure we're just gonna do a great job. So we equally respect your experience. So जब आप बात करते हैं this sixth principle की removing discrimination in the employment and occupation, this actually will call a lot of courage on the part of the leaders and the business, because we as a corporate leaders or business community need to come out of this comfort zone, and we need to challenge our own status quo, which we have for different gender and age and races. So maybe the need of the hour is that we challenge this status quo and this mental blocks ourselves, and only then we can do something constructive for the society and the people as well. So that's my take on it. We have, this is not like a pill that you give it to somebody, you swallow and everything gets resolved. So we have to align and realign all our practices around this theme of discrimination. Only then, as business leaders and as business community, I guess we can progress. All right, great. So what you say that we need to realign our policies, procedures, and everything around this principle. Okay, now. Yes, yeah. And we need to understand why we are doing it, just for the sake of it, or we need to genuinely adopt it kind of thing. Great. So can I fully ask Mr. Atif Sheikh Saab to throw some light on it? Thank you very much, Akram Saab, for this detailed introduction. Actually, I'm humbled to contribute that we have been working on disability inclusion for last more than 2 decades. And we have been working with development sector, corporate sector, and governments at the different level so that we can include people with disabilities in the policy level. So I would not answer all these questions one by one, but in a nutshell, but I would like to respond from the human rights perspective of disability, that how people with disabilities are being discriminated
on how people with disabilities are not giving the job or opportunities at the merit basis. So may I ask you, if nobody is there who doesn't understand Urdu, so we should continue in Urdu, or should we? Perfectly, all right. We can go in multilingual, no problem, no issue at all. Please, I would prefer if you like to speak in Urdu. Fantastic, beautiful, no problem. Thank you. Because if all of us are understand Urdu, then it's better to go with the local language. So, please. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि लेबर मार्केट के अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अभी तक शामिल नहीं किया गया। अभी तक हम कोटा सिस्टम या चैरिटी बेस्ड मॉडल के ऊपर बेस करते हैं कि कोटे पे डिसेबल लोगों को हायर कर लिया जाए, वो काफी है। कोटा सिस्टम भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, वो इसलिए कि जब कोटे पे लोग अप्लाई करते हैं या डिसेबल लोग लेबर मार्केट में आना चाहते हैं, तो हमारी जो मार्केट है, ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा जहाँ वर्क प्लेसेस है, वो एक्सेसिबल नहीं है। अगर कोई व्हीलचेयर यूजर किसी तरह को डिग्री हासिल कर ले और जब वो जॉब करने निकलता है, कोटे पे उसको जॉब मिल भी जाती है, तो वो बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं होती, वो कोटा उसके किसी काम नहीं आता। कोटे इम्प्लीमेंट ना होने के कुछ फैक्टर्स और भी हैं, जैसे अभी तक लोगों को खुद अवेयरनेस नहीं है कि मैं जॉब कैसे ले सकता हूँ, और या जहाँ वो अप्लाई करते हैं वहाँ लोगों को बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे कोटे की अवेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं है, सिर्फ पॉलिसीज या लेजिस्लेशन में तो मौजूद है। फिर डिसेबल लोगों की एजुकेशन, उनकी अप्रोच, बहुत सारी चीजें जो कोटा इम्प्लीमेंटेशन में को रोकने में एक रोल प्ले कर रही है। उसके बाद जब डिसेबल लोग, फर्ज करें अभी कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा काम शुरू किया इसके ऊपर, खासतौर पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में पाकिस्तान में, कि डिसेबल लोगों को हायर किया जाए, उनको किसी तरह एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज में लाया जाए। उसमें बहुत सारे लीडिंग नाम है जो पाकिस्तान में लीडिंग चले, उन सब ने कुछ एफर्ट्स किए। अभी स्टेट बैंक ने पॉलिसी निकाली कि कमर्शियल बैंक डिसेबल लोगों को हायर करेंगे, इसमें हबीब बैंक, अस्करी बैंक, जेएस बैंक, बहुत सारे बैंक्स ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरिट बेसिस पर डिसेबल पर्सन को हायर करके उनको वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिसके मुताबिक, जिससे वो अपनी डिसेबिलिटी पे ओवरकम करके काम कर सके। अब इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर दे आर वेरी लिमिटेड पीपल हु आर गेटिंग हायर्ड बाय दीज कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 1998 के सेंसस के मुताबिक जो तादाद है मालूम अफराद की, वो है 2.49%, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के एस्टिमेट्स इसको 10% कहते हैं, 2.49, और जो यूएन के एस्टिमेट्स है दे आर 10%। वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी 2012 के मुताबिक दे आर 10 to 15%, जबकि हमारा डाटा जो 2017 का सेंसस था उसमें डिसेबल पर्सन को काउंट ही नहीं किया गया। तो हम अगर एज्यूम करें, जो पाकिस्तान PSLM सर्वे हुआ, PSLM सर्वे से के जो रिजल्ट आए वो भी 7 से 8% जो डिसेबल लोग हैं पाकिस्तान में, तो इतनी बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ना हम उनको एजुकेशन फैसिलिटीज दे पा रहे, ना हम उनको स्किल्स दे पा रहे हैं, ना हम उनको लेबर मार्केट का हिस्सा बना रहे हैं। दे आर द इकोनॉमिक बर्डन ऑन द सोसाइटी। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक इकोसिस्टम है जिसके अंदर हमें इंटरवेंशन करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि बाकी जिम्मेदारियां एजुकेशन या रिहेबिलिटेशन की हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्सेज विद डिसेबिलिटी इन द मार्केट। उसमें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टेट बैंक की पॉलिसी मौजूद है कि डिसेबल लोगों को स्मॉल इजी लोन्स दिए जाएं, लेकिन हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जो स्किल देने वाले इदारे दे आर नॉट इंक्लूसिव। उनके ऊपर काम करने की जरूरत है कि डिसेबल पर्सन्स को एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल प्रोवाइड की जाए, और जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दे शुड बी इंक्लूसिव। जब वो डिसेबल पर्सन हायर हो जाते हैं या किसी जॉब में आ जाते हैं, तो वहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि हम अभी तक हमारी जो माइंडसेट है वो अभी तक चैरिटी मॉडल और मेडिकल मॉडल के ऊपर सेट है। हम कहते हैं ये बेचारे बीमार हैं, ये बेचारे ठीक होंगे तो मुआशरे का हिस्सा बनेंगे, ये बेचारे जब
कुछ कर नहीं सकते, चलो कोटे पे आगे इनसे काम ना लिया जाए। वो डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए वी नीड एन एडवोकेसी कैंपेन, जिसको हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन अबाउट डिसेबिलिटी, जिसमें हम लोगों को ये डिसेंसिटाइज करने की जरूरत है कि डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल, पीपल हैव टू लिव विद इट। इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने एज ए डाइवर्सिटी, अब पूरी दुनिया में ट्रेंड है कि डिसेबिलिटी को एज ए डाइवर्सिफाइड वे ऑफ लिविंग एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, आपको लैपटॉप दिया जाता है, मुनासिब लाइट होती है, बैठने की जगह होती है, ताकि आप प्रोडक्टिव हो सकें। अगर आपको लैपटॉप ना दिया जाए या काम करने के लिए जो चीजें आपको चाहिए मशीन वो ना दी जाए, तो यू कांट प्रोड्यूस एनीथिंग, यू कांट प्रोड्यूस। इसी तरह अगर डिसेबल्ड पर्सन्स को उनकी डिसेबिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से चीजें दे दी जाए, व्हील चेयर, accessible transportation or accessible washroom or workplace, they can equally produce, they can be equally productive. इस तरह डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप एनवायरनमेंट को फिक्स कर दे तो कोई भी डिसेबल्ड पर्सन नहीं रहेगा, कोई भी डिसेबिलिटी का। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप सब लोग, जितने भी लोग हम इस माशरे में किसी ना किसी सूरत में व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं। आप भी व्हीलचेयर इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने ऑफिस जाते हैं या वर्क प्लेस पे तो आप एक गाड़ी में जाते हैं जिसके अंदर चेयर होती है और व्हील होते हैं, लेकिन आपकी व्हीलचेयर आपकी जरूरत के मुताबिक होती है, अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपनी व्हीलचेयर पर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी व्हीलचेयर को आप बाहर खड़ा करते हैं। कुछ लोगों को अपनी व्हीलचेयर अंदर ले जाने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए रास्ते नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट को अगर आप इनेबल कर देंगे, नोबडी विल बी डिसेबल्ड। और अगर एनवायरनमेंट इनेबल होगा, डिसेबल्ड लोग माशरे में काम करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी कम से कम होती जाएगी, वो स्टिग्मा जो है वो हम रिमूव कर सकेंगे। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड जो अक्सर डिबेट में आ जाता है कि स्पेशल पर्सन कहा जाए या डिफरेंटली एबल्ड कहा जाए या चैलेंज कहा जाए, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा मुख्तसरन कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को पाकिस्तान ने रेटिफाई किया था 2011 में। इसकी रेटिफिकेशन का मतलब है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी द अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी ह्यूमन राइट्स अप्रोच या पर्सन फर्स्ट अप्रोच है। पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी का लफ्ज यूज किया जाए, और बाकी अगर हम कहना चाहें स्पेशल पर्सन या डिफरेंटली एबल्ड या चैलेंज में, जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आप इससे डिसेबल लोगों को काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए बजट एलोकेशन नहीं कर सकते, उनके लिए सहूलियात नहीं मैसर कर सकते। क्योंकि अगर हम किसी को कहें कि ये डिफरेंटली एबल्ड है, तो हर कोई डिफरेंटली एबल्ड है दूसरे से। How can we identify? A person with disability need to be identified, counted as a member of society, environment need to be fixed, और ताकि कोई डिसेबल ना रहे। और उसके साथ साथ हमें ऐसे रोल मॉडल्स को सेट करने की जरूरत है जिससे ये इमेज आए, ये तासुर आए कि डिसेबल लोग माशरे में एक करामत शहरी बन सकते हैं और वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में, कंपनीज की प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, उनकी डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। थैंक यू वेरी मच। मैं साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आई वुड बी हैप्पी टू। थैंक यू वेरी मच। मैं कहता हूँ आतिफ साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। मैं तो वाकई इस परसेंटेज पर अभी तक मैं हैरान हो रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट 10 to 15%। आप 10% भी लगा लें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 22 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान, और इनके मुतालिक जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आई अंडरस्टैंड 100%। आई हैव स्पेंट माय गुड नंबर ऑफ years in corporate life, and I would really agree with you. The very few multinational companies have got this benefit of this disability quota of the 2% people in their organization. Now, yes, this is again a very important topic of this discrimination issues, and which is really touching this principle. So we will definitely come back to you on this issue. But before that, I would like to move to Ms. Mehak Masood, and I would ask you, ma'am, what do you think that this principle mean to you as a corporate person? That the elimination of discrimination in respect of employment and occupation,
how does it appeal to you, this principle? Please, Ms. Mehak Masood, kindly. Thank you, Krab and Alia and Atif Sahab has shaped the conversation in a very productive flow. So if you consider as personally and as a corporate entity, no sort of discrimination on any basis, either is gender, either is disability or religion, it's acceptable in a way. Ye to I think it's also a discrimination. It's not even allowed in our daily lives as well. So as a, hum logo ko, as a corporate entities, so if we are giving employment opportunity to a person on a place basis pe, discriminate karna, example, dungi, if I am being a female, you've been discriminated if you not been taken jobs. The same if there's disability, quota, they tend to have a resistance that why we should, have someone or not in that place. So, ye jo cheez hai, ye discrimination should not be at any level. But uske alawa, as a corporate executive or as a person, I think जैसे अभी regulations बन रही है, आपने अभी State Bank की mention की, so banks are now working on having a quota of people in there, and then they are working a lot in a different way. अभी bank मैंने उनके साथ एक हमने workshop attend की थी, so they explained their whole and how the step-by-step transition they took to they did for that. हम लोगों के लिए as considering from the textiles, because it's a labor intensive industry, so we also trying to see where possible we can include people with disability, eliminate discrimination. We remain successful as well, but there's a long way to go as well. So any sort of discrimination is not acceptable, and this principle really help us to shape our strategies and policies around that. Thank you. Great. Okay, now I'll pose another question here. देखिए, corporate world में एक जुमला बड़ा बोला जाता है, खासतौर पर वो लोग जो HR की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ये उनका it's a slogan that right man for the right job at the right time and the right place. Do you agree with me? कि ऐसा HR के लोग खास तौर के ऊपर ये बातें जरूर करते हैं कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट को एनहांस करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एनहांस करना है, तो भाई ब्रिंग राइट पर्सन इन. सो राइट मैन, और वहां भी बदकिस्मती से लफ्ज इस्तेमाल है राइट मैन, ठीक है ना, ये स्लोगन है. राइट person should be the right word, right person for the right job at the right place and the right time. Now, जब आप बात करते हैं इस elimination of discrimination at workplace, so how does this slogan justify? So anyone can answer, please? Shall I start? Yeah, please go Yes, ahead. I think Alia can. Yeah, Ali, please go ahead. So Akram साहब, आपने बहुत rightly कहा था. पहले तो ये बात है जो discrimination within this slogan है ना, we have to correct that. It's never a right man or right woman. It's always a right person for the right job at the right place and at the right time. I think even if we say the slogan should be reviewed. Right yes, person it is the right itself word. has discrimination in it, right? So we can propose it to whosoever invented this slogan, right? Keep it right person, not the man or woman, right? So the point is, yes, HR focuses on hiring the right person for the right job at the right place and at the right time as well. We follow this very strictly. And even if we follow this very strictly, it does not mean that this has anything to do with discrimination, right? At the end of the day, all we focus is to hire people on merit. It can be a man, it can be a woman, it can be any gender, it can be any race, it can be any religion. The bottom line is that you hire on merit basis, then it justifies, and then automatically the discriminatory element is eliminated, right? The problem only occurs when we are fixated too much on one element of the job, that this job can only be performed by a certain gender, certain age, certain ethnic group, or we don't want to hire
certain religion-based people, or we don't want to hire women against this job. For example, just the other day we were having a talk, the occupations that job roles women will not be able to fit in. So one of the profession or the job role they gave the example was the lifter, the loaders jo hote hain, right? So even we talked about that. We said, even a woman can do this job if you give her the right tools. Give them the forklifter, something jo machine jo ke saman utha ke yahan se wahan kar de. So again, if you provide the right tools, jis tarah Atif saab ne bhi initially baat ki, so be it any gender or any other person, they can easily perform the job. So definitely, if you focus on hiring potential, and which ultimately companies have to open up to, not every time you are going to get the experience for a job. Otherwise, the talent pool will remain the same. वही लोग एक जगह काम कर रहे हैं, वोट के कहीं और चले जाते हैं. जो आपके पास Gen Z आ रही है, ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, they will never find a good job. So focus on the right person, and I think इसमें हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं कि हम men को replace करें person से, और हम इसमें कह दें right person for the right job with the right potential. So it will further reduce a lot of discriminatory factors, I believe. Okay. Right potential, that's a very, very good thing you have added. Okay. Right potential. So देखिए, right potential होगा, तो that's why it will be a right person, right? So the potential must be there for the job to be performed. तो हम जब person की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अब तीनों को cover कर लेते हैं. जैसे आतिफ साहब ने फरमाया, जो हैंडीकैप्स हैं वो चाहे मेल फीमेल हो, और हेल्दी पर्सन मेल फीमेल हो, तो द राइट पर्सन वुड बी देयर. तो इट मींस या गो अहेड. जी हाँ, आई थिंक हम पर्सन की हटाते हैं, पोटेंशियल की बात करें. Potential will cover the person, the gender, the differently able people, the different cultural backgrounds, religious backgrounds. Just focus on the potential. So, in other words, you agree that this slogan, after making this small changes, can help us to eliminate the discrimination at workplace. Do you agree with me? Right? I would agree with this change. I would agree. See, hiring the right potential is very essential. You cannot hire people just for the sake of it to claim that I am against discrimination. There is no discriminatory practice in my organization. You cannot hire a person like me, who is a qualitative person in a position which relates with numbers and finance. It's bound to fail, right? So when you talk about just potential and for the right skill set match, it actually works wonder. And discrimination automatically takes a backseat. Great, very, very good. So I would pose the same question to Madam Mehak Masood. Yes, ma'am, considering your background and experience in the corporate world, so would you please let us hear from you? Firstly, हमें अपनी HR की, which I want to highlight the point कि आपने ऐसे explain किया every man. So हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज अपनी पॉलिसीज में और अपने स्ट्रैटेजीज में इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, which could be not only focused on gender based but also factoring the other things are in place, like this people with disability, as Alia was mentioning. So it should be, and then again usko follow up kare, usko back up kare, with the training से behavioral change tools के साथ, group settings के साथ. So this is a step-by-step process which we need to incur in, and it's a long journey in that way. I would say skill set development, yeah, potential. Everyone should be be given equal opportunity. So they should not be discriminated. And again, these things should be developed in our, our next pool of young people, unka talent. These things to be related to job skill set, it should be part of the curriculums that needed to be revamped so that people हम ये पे debate भी ना करें कि skill set है, if someone is potentially up for the job. If I consider myself as a sustainability and climate change person, so I have a particular skill set which
is not very it's not very common in that way. But it was very difficult for me to, when I start my career 10 years back, so it wasn't very easy to be fit in the role. But now it's been developed in all the organizations, gradually making it up. So now I will see that I will hire people potentially who has a potential plus passion to save the environment, and they are very passionate about it. So हमें फर्स्टली तो ये चीजें कैटेगोरिकली बहुत ज्यादा इसके ऊपर कन्वर्सेशंस रखनी चाहिए, कम्युनिकेशंस रखनी चाहिए, ओपन ट्रांसपेरेंसी, कि हमने हमारी जो आगे हायरिंग्स हैं या आगे जो हमारा जॉब पोटेंशियल या मार्केट डेवलपमेंट है, उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन को किस किस एंगल से वी कैन अनडू. Step by step process है, ये एक दिन में नहीं होगा. It involves all the stakeholders to be in place, and then we have a case studies, successful case studies in Pakistan as well. Or for me, if I rephrase that thing, is when there is a right person, has the right potential, will get the job. It's just we need to make that conducive environment for them to thrive. Yeah. Agreed. Okay, Atif Sahab, I have the same question to you. कि जो हमारा स्लोगन है, जिसको भी इन्होंने अभी बड़ा rightfully have asked Ms. Alia to change it, the right person for the right job at the right place and the right time with the right credentials, right, Alia? Right potential, right potential. So does it help to eliminate discrimination at workplace? So my question is to now Mr. Atif. Atif Sahab, would you come back on this question, please, to reply? The right person for the right job at right place and right time and with right potential. तो क्या ये स्लोगन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, does it help to eliminate discrimination at workplace? Does it? What is your opinion about it? Using this? बिल्कुल ठीक है. इसमें एक्चुअली होता ये कि तमाम जो आपने कहा, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट वर्क एंड राइट पोटेंशियल, ये सारी चीज़ों के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, जिसमें हमने जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म. बाज़ औक़ात ये रिलीजियस या एथनिसिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है. और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, कि दे आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी. इसमें वो बेचारे और इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. या वो ओवर सिंपथाइज हो जाते हैं, यानी कि कहा जाता है कि ये अल्लाह लोग हैं, इनको तो डिसेबल कहने नहीं, इनसे काम ना लो, इनसे बस दुआएं लो. They are discriminated. This is positive discrimination. They are over cared by the society. Negative discrimination ये होती है कि यार ये तो पता नहीं बीमार है, ये किसी गुनाहों की सजा मिली हुई है, तो इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. तो ये तमाम पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज और अपनी अप्रोप्रिएट जॉब पे होने के बावजूद पीपल आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. और इस डिस्क्रिमिनेशन में सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारी कल्चरल सेटिंग्स है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स है. हम जब तक, फिर मैं उसी बात को एक दफा फिर जोर दूंगा कि हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. हमारे यहाँ माजरत के साथ कि हम शक्लों के ऊपर जाते हैं, इसका रंग काला क्यों है, ये लंबा क्यों है, ये छोटा क्यों है, इसका नाक बड़ा है. हम इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं फेसेस के बेस पे. हम अभी तक डाइवर्सिफाइड कम्युनिटीज को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं हुए. हम अभी तक डाइवर्सिफाइड लोगों को, यानी कि जो हमसे मुख्तलिफ नजर आ रहे हो, हम वी आर नॉट रेडी. होमोजीनियस किस्म के हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस. अगर वो एक्सेप्टेंस के स्टैंडर्ड हमारे थोड़े से चेंज हो, हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करें, देन डिस्क्रिमिनेशन विल बी लोअर डाउन. फिर एक और डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, रिच एंड पुअर, जो हमारे अगेन कल्चरल जो हमारी नॉर्म्स हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं. तो वी नीड टू चेंज द कल्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और ये इतना आसान नहीं है. इट टुक डेकेड्स इन डेवलपमेंट वर्ल्ड. इवन वहाँ भी अभी तक, जहाँ सिविल राइट्स मूवमेंट हमने देखी अमेरिका की, 70 साल होने वाले हैं, अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट की डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुई है पूरी तरह. दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट. हमें अपने एनवायरनमेंट में, हमारे बिजनेस
कम्युनिटी के अंदर हमें इस तरह का कल्चर प्रमोट करना होगा कि वी शुड एक्सेप्ट पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट gender and different disabilities and different capabilities. I got yes जी जनाब अली बिल्कुल आपने ये कहा है I think as a society we are not that ready as yet as a whole जैसे मैं आपकी बात समझा हूँ, लेकिन जब अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका क्या गवर्नमेंट इसका हिस्सा नहीं है? अगर गवर्नमेंट इसका हिस्सा अब ये पूरा इकोसिस्टम है, हम गवर्नमेंट की तरफ से चाहूंगा कि आप बताइए जरा प्लीज इस पर कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन? क्या खाली वो सवाल क्या नाम है वो पॉलिसी बना के बैठ जाए कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे एट वर्क प्लेस, जैसे आपने अभी खुद ही फरमाया कि 2% कोटा का जो कानून बना हुआ है जो कि फॉलो ही नहीं होता, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर फॉलो नहीं होता, तो व्हाट रोल गवर्नमेंट शुड प्ले टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस? तो और नंबर 1, नंबर 2, क्या आप सेटिस्फाई हैं? मैं ये सवाल मेरा तीनों से है कि गवर्नमेंट इज मेकिंग इट्स एफर्ट्स, एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। सो प्लीज मैं इसमें रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का रोल जो है डिस्क्रिमिनेशन में बहुत क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह। गवर्नमेंट ने अगर ऐसे लॉ बना दिए हैं, जो ऐसा लॉ नहीं है हमारे यहाँ, तो जो किसी भी इदारे को पाबंद करे कि ये बिल्डिंग फुली एक्सेसिबल होगी फॉर व्हीलचेयर यूजर्स, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिसी और लेजिस्लेटिव लेवल डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके लॉज, आपकी जो पॉलिसीज है वो इंक्लूसिव नहीं है, तो दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, पीपल आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैंने जैसे कि कहा कि ये कल्चरल नॉर्म है, डिस्क्रिमिनेशन इज पार्ट, मेनली पार्ट ऑफ द कल्चर। तो ये कल्चर या ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन की कैंपेन इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। पहली बात, लेजिस्लेशन ऐसी बनाई जाए, पॉलिसी ऐसी हो कि कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो। फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये रोल मॉडल डिस्प्ले किया जाए कि नोबडी इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। अभी तक हम लोग ये चीजें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तो देख रहे हैं कि वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज भी बना रहे हैं और उसकी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रहे हैं। अब भी इसके छोटा सा एक और इम्पोर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन का, हमारी when we procure things we don't keep the diversity of the society. हमारी जो प्रोक्योरमेंट्स हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर की, वो देखते हुए कि जब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि क्या हम उसमें खवातीन का ख्याल रख रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, क्या हम डिसेबल लोगों के लिए ख्याल रख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल उसके अगर फर्दर ये है कि हम एक वॉशरूम डिसेबल फ्रेंडली होगा या नहीं होगा, वी विल प्रोक्योर द इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। अगर हमारे पास डिसेबिलिटी इंक्लूसिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज भी हों तो हम डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, हमारा जो हमारा इक्विपमेंट है, फैसिलिटीज हैं बिल्डिंग के, प्रीमिसेस की, वो कैसी होंगी। तो हम सबसे पहली बात है कि लेजिस्लेट पॉलिसीज। हाँ, अब मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल डिग डाउन करूंगा कि 4 किस्म की बैरियर्स है व्हिच डिस्क्रिमिनेट पीपल विद डिसेबिलिटी इन सोसाइटी। पहले तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया कि एटीट्यूडल बैरियर, बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड्स। दूसरा है कम्युनिकेशन, इफ पीपल आर नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। नंबर 3 है हमारा उनके साथ जो एटीट्यूडल, और हमारी जो तीसरा है लेजिस्लेशन और पॉलिसीज अगर इंक्लूसिव नहीं है, अब दूसरे ले लें जो पॉलिसीज जो हमारी है लेजिस्लेशन, वो अगर हमारी इंक्लूसिव नहीं है तो दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। और हमारी जो ये तमाम चीजों के बाद फिर हमारे कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं। तो ये बैरियर्स हैं जिस वजह से हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। थैंक यू। मैम आलिए, कैन यू प्लीज कम बैक ऑन दिस क्वेश्चन कि गवर्नमेंट का रोल आपके ख्याल में क्या है? गवर्नमेंट को एंटायर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बनाने के साथ साथ प्रैक्टिसेस के शोकेस कि गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जो सर्विसेज है, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल विद डाइवर्सिफाइड नीड्स और डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड्स।
दैट्स ओपिनियन के गवर्नमेंट अपने ऑफिस में नहीं कर रही, ना करे अगर ना करे। ओके फाइन फाइन। मेरा सवाल अली साहब आपसे है, प्लीज कैन यू प्लीज कम बैक ऑन दिस क्वेश्चन कि गवर्नमेंट का रोल क्या है और होना चाहिए? कैन यू जो गैप है आइडेंटिफाई दिस गैप प्लीज। ओके अकरम साहब, जिस तरह अभी आदिल साहब ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट पॉलिसी, पिनल कोड है, चाइल्ड एक्ट प्रोटेक्शन है, ट्रांसजेंडर एक्ट है, हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एक्ट है, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग वन पॉलिसी और दी अदर, और हर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि दिस इज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट. But I often think to what extent government is actually taking pain to investigate or to ensure that these policies that they are making are actually practiced by the organizations in true adherence spirit. क्या कहीं organizations में इनकी policies से paper pencil work तो नहीं है, something that people are adopting and then claiming medals. गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल बहुत जरूरी है कि सिर्फ पॉलिसी बना देने से देखिए कुछ नहीं होता. जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स दैट दे हैव सेट इन. क्या उन्होंने कोई विसल ब्लो कायम किया हुआ है, क्या कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो जाके देखते हैं कि जी ये पॉलिसी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही. क्या कहीं फोर्स डेटा तो इनको प्रेजेंट नहीं हो रहा जब इनके ऑडिटर्स आते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि ये एक वीक लिंक है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्चुअली हैज टू हैव रिप्रेजेंटेशन टू इंश्योर कि दिस पॉलिसीज आर बीइंग प्रैक्टिस्ड फेयरली. एंड देन मे बी गवर्नमेंट, अगर जहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मे बी हमें ये भी देखना है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके खुद के इदारों में डाइवर्सिटी है कि नहीं है, उनके खुद के इदारे डिस्क्रिमिनेशन से कितना पाक हैं, so they have to walk the talk as well. So yes, I feel a gap when it comes to seeing the implementation of these policies. And then देखिए a lot of times आप generalized policies बना देते हैं, but maybe some companies because of their geographical location यहाँ पे वो based हैं, उनकी maybe challenges फर्क हो, तो कहीं ना कहीं they have to go and meet those people and maybe have something customized for them as well. But in the nutshell, implementation of these policies by the institutes or the organization is a weak link. So now I will turn towards महक मसूद साहबा, आपकी तरफ प्लीज. आप मुझे बताइए, आप लोग तो बेसिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिनों रात गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं. What do you think about this question? क्या रोल होना चाहिए, क्या है आपके ख्याल में? जैसे बताया आलिया साहबा ने कि भाई ये तो इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश किए ही नहीं है, कई किस्म की पॉलिसीज बना दी हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने इसको अकाउंटेबिलिटी की तरफ के लिए नीचे आते ही नहीं है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गैप? ये गैप डेफिनेटली है. मेरा अपना I also worked in government job as well. When I was previously before the corporate sector, when I was working with the German government, so I was doing a lot of projects with different ministries at federal and provisional level. Further, we will be discussing about that as well. मेरे ख्याल से जैसे आलिया is explaining हमारी different policies बनी है. अगर if I take it back 10 years back, जब हमारी harassment policies और लेबर जो लॉज हैं वो भी रिवैम्प हुए हैं विद इन द टाइम. देयर्स डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज डेवलप की, जैसे स्टेट बैंक ने डेवलप किया. नाउ द बैंक्स हैज टू नीड टू हैव दैट थिंग अप, और आई कैन सी द रिजल्ट्स. द बैंक्स हैव स्टार्टेड दैट. अभी बैंक उन्होंने तो ऑलरेडी बहुत अच्छा इस पे काम कर लिया, बट अदर बैंक्स आर आल्सो वर्किंग हाउ दे कैन डू इट. बट अगेन इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटिंग इन्वॉल्व, दैट्स पॉसिबल इन दैट वे. हमारे बिल्डिंग कोड्स में एक्सेसिबिलिटी और ये सारी चीजों की प्रोविजन है. विदाउट दैट आप लोगों एनी पब्लिक इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी हॉस्पिटल. अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अ हॉस्पिटल की, सिंस आई वर्कड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो कोई भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग अप्रूव नहीं हो सकती अगर उसमें रैम्प्स नहीं है, या यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज नहीं हो सकती. एंड सेम गोज विद इंस्टीट्यूट्स लाइक दैट. अगेन यहाँ पर रेगुलेटर्स आ जाएंगे डिफरेंट. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एक रेगुलेटर हो जाएगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, लेबर डिपार्टमेंट भी है, बट
बिल्डिंग कोड्स वाला डिपार्टमेंट भी है जो अप्रूव करता है, उसमें फायर फाइटिंग, देयर इज लाइक अ लॉन्ग लिस्ट जब एक बिल्डिंग अप्रूव होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो मेरा पॉइंट ये है कि लॉज होते हैं डिफरेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेटर्स, उसकी अवेयरनेस हमारे पास है। How we can do that, again accountability, ownership of that policy कौन ले रहा है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएगा या उसकी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन कराएगा, या लेबर डिपार्टमेंट का ये मैंडेट है। सो ये वाली अवेयरनेस दैट रियली नीडेड टू बी फैक्टर इन एज वेल, बिकॉज इट्स आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और बिजनेसेस के लिए भी ये सर्टेन थिंग्स जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी चेक कर रही होती है, सर्टेन थिंग्स जो लेबर डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट चेक कर रहा है। सो ये इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड गैप दैट आल्सो बिल्ड ऑन इस चीज के ऊपर। I think that's government has to factor in. They also need to change their culture, which I will see gradually, a very, very gradual process. Like within that, their quotas, even if you go from the top bureaucratic level, top governance level, जो कि है हमारी bureaucracy है, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता people with disabilities we can see, we have a women ratio is increased, a very gradual step by step thing, include streaming it, so from top up and bottom up. So ये गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को आपस में भी बैठना चाहिए, वो फैक्ट करेंगे का क्या रोल है, that they can if there are policies in place, sexual harassment act is place, or disability act or all these things, उसकी लैंग्वेज जो है वो when we had in cases, legal cases, then वो उसमें additions हुई हैं. So I won't say कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, that would be good, more policies should be in place, but again action plans भी होने चाहिए और roles and responsibilities बड़ी clear होनी चाहिए कि किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करना है और किसका क्या मैंडेट है. अगर इंडस्ट्रीज के अंदर चेक करना है तो दे भी लेबर डिपार्टमेंट वुड बी ओनरशिप, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट में काम करते जब तक ओनरशिप नहीं आएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव होगी. इसका मतलब ये हो कि हम अभी तक इस पर एग्री कर रहे हैं कि देयर इज अ गैप, और ये गवर्नमेंट ने जो कुछ पॉलिसीज बनाई हैं वो और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उसको जो रियल लेटर एंड स्पिरिट जो थी वो उसके मुताबिक शायद ये पॉलिसीज पर अमल दरामद नहीं हुआ. तो अब जैसे आपने फरमाया कि गवर्नमेंट ये बैंक्स जो हैं अब इतने सालों बाद, ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये आसिफ अली जरदारी साहब के ज़माने में ये लॉ बना था, तो उसको भी उनके ज़माने को गुजरे हुए मुद्दतें हो गई हैं, लेकिन अब बैंक्स को समहाउ ये एहसास हुआ है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ इन अवर ऑर्गेनाइजेशंस. इसी तरह से जो आपने जिक्र किया हॉस्पिटल्स का, तो ये हॉस्पिटल बिल्डिंग को तो मजबूर है बेचारे, क्योंकि उनके पास तो जो आएगा वो पेशेंट ही आएगा, और वो पेशेंट अगर जाहिर है कि हैंडीकैप होगा तो वही आएगा, और कैसे चल के आएगा. तो दे आर फोर्स्ड टू अडॉप्ट सच काइंड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर कल्चर कि वहां पर वो बड़े आराम से उनको कर सकें. लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई हैव सीन वेरियस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान कि जिन्होंने अपने यहाँ बहुत सारी जगहों ऑफिस के अंदर रैंप्स तक प्रोवाइड नहीं किए हैंडीकैप्स को कि वो आए और वहाँ पर अपना केस पेश कर सकें, या किसी भी तरीके से अगर आना पड़ जाए उनको. फॉर एग्जाम्पल कोई उनका शेयर होल्डर आ रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है बदकिस्मती से. खैर एनीवे, मैं आपसे कहता हूँ इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई कि गवर्नमेंट जो है वो अगर उसने लॉज बना भी दिए हैं, पॉलिसीज बना भी दिए हैं, तो उसको प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या उनके पास कहीं विलिंगनेस की शॉर्टेज है वन वे और अनदर. तो ये मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा यहाँ पर आप तीनों हजरात से कि वी ऑल नो दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन what he pretty famously said based on race, color, religion, political beliefs and your opinions, for example, social or ethnic origins. इसके अंदर आपके ख्याल में कौन सी जो है सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किस एरिया में होता है? Is it based on race or color or religions or political beliefs or opinions or social or ethnic origins?
किस बुनियाद के ऊपर आपके ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है? What do you think about it? From since I'm in HR, so जो मेरा experience so far बताता है, जो मैंने observe किया, ये काउंटर जो हमारे different colleagues ने बात किया है, I think सबसे बड़ा जो एक discriminatory factor है ना, वो gender है. Specifically when you talk about employment, you know, we've got fixed perceptions के अगर आप खवातीन को hire कर लेंगे तो क्या problems आ जाएंगी, अगर शादी नहीं हुई है तो कल को शादी हो जाएगी तो जॉब छोड़ हुआ है, एंड देन अगेन ठीक है प्रमोशन अगर देनी है और आपके पास दो इक्वली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हैं, वन इज अ मेल एंड वन इज अ फीमेल, तो टिल्ट टुवर्ड्स मेल होता है बिकॉज ही इज अ ब्रेड अर्नर, ही हैज टू सपोर्ट द फैमिली, यू नो. फिर मटर्निटी लीव्स का आ जाता है कि यार अगर हायर कर लेंगे फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, मटर्निटी लीव्स हो जाएंगी, फिर पता नहीं ज्वाइन करती है नहीं करती है. So if you ask me, as far as HR person is concerned, सबसे बड़ा जो एक discriminatory element है ना, जो कि बाद में pay and transfers and rotations and learning opportunities and everything govern करता है, वो gender है. और उसके बाद अगर आप बात करें तो फिर बहुत सारे लोगों का, जिसकी थोड़ी से पहले भी बात हो रही थी, आतिफ साहब भी मैं भी कर रही थी कि हम हायरिंग करते हुए या लोगों को आगे ले जाते हुए ना, हम बहुत बाउंड होते हैं अपने अपने पर्सनल बायसेस से, अनकॉन्शियस बायसेस से. हमें वैसे लोग चाहिए जो हमारे जैसे हों ताकि काम जल्दी हो जाए, हमें वैसे लोग चाहिए जिनसे हमारी बनती अच्छी हो, हमें हमारे से मिलते जुलते रिलीजियस, एथनिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लोग चाहिए. तो ये पार्ट एंड पार्सल है. बट यस, फॉर मी जेंडर इज द बेसिक डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि मुझे लगता है बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन इसके ऊपर हो जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट द मल्टीपल अदर थिंग्स स्टार्ट टू हैपन. Okay, so what do you think, Atif Saab? What would be your question? What would be your answer for this question? कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किस एरिया में हो रहा है? Whether it's based on religion, sex, creed, color, disability, political beliefs, etc., etc. आतिफ साहब, आपका क्या ख्याल है? आप जरा बताइए इस मामले में प्लीज. आतिफ साहब, आर यू देयर? आई थिंक हम जेंडर के साथ साथ जो आतिफ साहब का पॉइंट है ना, डिसेबिलिटी वाला जो एलिमेंट है, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर है. जिस तरह महक ने भी कहा कि जब हम अपनी प्रेमिसेस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का खड़ा हो रहा है, तो बहुत कम जगहों पे ऐसे है जहाँ रैम्प्स भी बनाई गई हैं, टॉयलेट्स का स्ट्रक्चर फर्क है, सिटिंग अरेंजमेंट फर्क है, एग्जिट्स पे ऐसी चीजें लगाई हुई हैं कि जहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए तो जो आपके साथी हैं जो फिजिकली चैलेंज हैं, या जो उस तरह बोल नहीं सकते, या जिनको सुनाई नहीं देता है, या जो चल नहीं सकते, उनका एग्जिट का मैकेनिज्म. तो हम हर वो काम करते हैं जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि हमें थोड़ा एफर्ट कम करना पड़े और गेन ज्यादा आ जाए. सो ये यस, जेंडर एंड अ लॉट ऑफ, क्योंकि कोटा फिक्स हो गया हुआ है तो हम कहते हैं यार कोटा पूरा कर लो, बाकी देखी जाएगी. तो वो अगेन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में तो पॉलिसीज फिर उस तरह फॉलो नहीं हो रही. रेस्ट आतिफ साहब प्लीज कंटिन्यू. आतिफ साहब अभी नजर नहीं आ रहे, मेरे ख्याल है ड्रॉप हुए हैं. लेकिन मिस महक, वुड यू प्लीज से few words about that, and let's have your opinion on this. कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में, based on your experience and expertise, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किस एरिया में हो रहा है? प्लीज मिस महक, over to you. अच्छा, I cannot say anything with very conviction without having clear data driven, but agar if you are asking in my experience or my observation, I would say discrimination gender based pay, it's very common and prevalent. It's happening. मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा ये भी नहीं है, जैसे आलिया ने मेंशन किए क्वेश्चंस के, अगर if we hire a female, हमारी जो organizations are they well equipped with having female workers जो कि married हैं? Are they providing them daycares? Is there a paid maternity leave there? And if I come, is a paid paternity leave is there as well? अगर daycare नहीं है तो are they giving daycare allowances? So I've seen these practices. कुछ organization, this is now also a very gradual process. Few organizations are already working to provide build the daycare. Textiles mein, like we do have daycare
course, Alia Interloop also do have Yes. daycares. They are different respective units. So, and that's for also for all management staff. It's just not, it's for female workers as well and for all staff as well. So, अगर इस type की community है तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं when they got married or after having a baby, they stop their career as well. So, you know, एक रिटर्नशिप की भी एक पॉलिसीज और स्कीम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं. सो बहुत सारा आई विल फील कि डे डिस्क्रिमिनेशन बड़ा प्रेवलेंट है. अगर आप गवर्नमेंट के एंड पे बात करें, आई वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन के खवातीन की inclusion government departments में, because they got there's a law, they will get a 3 months maternity leave और ये सब चीजें. खवातीन अपने करियर आगे करती हैं, but again they have to compromise on certain promotions, they have to compromise on certain, you know, career growths and opportunities which male can have, you know, their male colleagues can, for example, traveling है, एक international conference attend करनी है, so somehow female who is a mother, she's a mother, she cannot go, वो नहीं जा सकती हैं, उनका घर पे support system, whatever the reason is. So and she's eligible for that opportunity, but the organization has to make it possible so the male colleague go for that. So yeah, discrimination, I think a few things are biases and few are the part of the default system, which we need to break those biases and make that environment conducive and inclusive as well. ये चीज जेंडर पे अगर परसेंटेज निकालें, I think it's a good research that needed to be done, that with the surveys and everything के किस basis पे employers discriminate करते हैं. Second cheese, definitely people with specially able people, employer will look a factor in the thing how that they will be fit in a very difficult working environment. It could be very banks working in banks, वो उनके लिए include करना easy है, but again हमारा infrastructure इतना develop हुआ है कि नहीं हुआ. There's a great example. Unilever has in the top leadership people with specially able personalities. Even government, you see people there, but again, number is very low. And again, they have to compromise on certain promotions and opportunities. So we need to develop our organizational ecosystem in a way that these people don't feel discriminated, and that's become the part of mainstream thing that they are being इसको हम इस तरीके से कम कर सकते हैं. I think it's a good research question which we need to explore further. Yeah, I agree. मैं आपसे agree करूँगा. Yeah, we need to have very good data to speak on this kind of topic. लेकिन हम बहुत सारी चीजें यहाँ इस माशरे में देख रहे होते हैं जो चीजें हो रही हैं. बस मेरा एक सवाल आपसे दोनों से ये है, मेरे ख्याल है आतिफ साहब ड्रॉप हो गए हैं, कि क्या आपने आपकी अपनी दोनों की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आदिल साहब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं अंदाजा? हमारे पास टोटल जो वर्कफोर्स है वो 31,000 इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव्स. माशाल्लाह 31,000. और महक साहब आपके यहाँ आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी महक साहब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? Total overall strength? जी आपके यहाँ जी. I think we are above 17,000. 70,000 across the group, more than that, and then it's a 30 to 40 rate, 40 to 60 ratio. I mean, you mean 40% खवातीन हैं आपके यहाँ? जी. अली साहब आपके यहाँ कितने परसेंट? 50% in the leadership. Sorry? And 50% in the leadership. Oh, 50% leadership. मतलब बराबर चल रहा है मामला. और 40% लेबर साइड के करीबन. जी अली साहब आपके यहाँ कितना है परसेंटेज होगा? Out of this 31,000 people जो के employed हैं उसमें 3,400 is the women का, तो 10 point something जो है women का percentage है in the employment, but our aim is to increase it to 30% ratio in coming 2 to 3 years time.
तो मैं आस्क कि आपके यहाँ क्या रीजन है कि आपके यहाँ ख्वातीन का रेशो बहुत कम है? आई थिंक एक तो चीज है क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली फैसलाबाद में है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव्स की बात करूँ अगर स्पेसिफिकली एट द मोमेंट, तो हमारी जो है हमारी जो यूनिट्स है मेनली और इन फैसलाबाद, तो हमें थोड़ा बहुत टफ टाइम यूज होता है जब हम कोई पोटेंशियल कैंडिडेट की सर्च कर रहे हैं IR, फाइनेंस, IS में, तो पीपल लोगों की विलिंगनेस टू मूव टू फैसलाबाद हमें एक बहुत पुशबैक आता है खवातीन की स्पेसिफिकली। इवन तो हमारे पास बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल्स हैं एंड एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज हैं, बट देन एक रिलक्टेंस आती है। नॉन मैनेजमेंट के हवाले से भी हम सोच रहे हैं कि हम एक नाइट शिफ्ट के हवाले से भी रेडी कर लें। अभी हमारे पास उस टाइम नाइट शिफ्ट खवातीन की नहीं चल रही, तो वो फर्दर स्क्वीज अप करता है टू हायर मोर women. बट देन अगेन रोबोस्ट प्रोग्राम्स आर अंडर प्रोसेस कि हम मजीद खवातीन को ऑन बोर्ड कर सकें। रिकनेक्ट इज वन प्रोग्राम जिस टाइम एक ने बात किया है, तो वी आर ट्राइंग कि हम जितनी भी फैसिलिटीज अपनी वुमेन वर्कफोर्स को दे सकते हैं और जहां जहां उसमें हम मेल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं, वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। So you plan to move up to 30% in next 2 to 3 years time. Okay, and ma'am, Mehak तो compared to Karachi, क्योंकि महक जो कंपनी में आर्टिस्टिक में दैट्स कराची बेस्ड का, कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी राइट, तो वहां पे आपको बहुत सारी वर्कफोर्स वहीं से मिल जाती है। जब आप पंजाब साइड पर आते हैं तो आपको यहाँ वहां से लाना पड़ते हैं। द माइंडसेट ऑफ हैविंग मोर वुमेन एंड देन दे मूविंग फ्रॉम लाहौर एंड XYZ एरिया and relocate to Faisalabad, whether they are married or they are single, तो वो एक tough call है, but then we are working on it by working on women friendly policies है। So, I understand. You have really very tough challenges, especially in this regard. Regarding disabled people, are you maintaining this 2% quota in your organization? You both guys. मैं directly उसको देख नहीं रही अकरम साहब, लेकिन yes हमने जो भी last year किया था, तो I think we are. I don't want to say कि yes we are, but जो मेरे नजर से गुजरा था तो we do have this quota being followed. Excellent. Same to you, Miss Mehak. Actually, since it's a provisional subject, so Sindh government has a quota of 5% over here as compared to Punjab, it is 2%. So we are trying to increase our, people with specially able in our workforce wherever we can is possible. So it's in a work in progress. Currently, I think we are around 2 to 3%. But again, अगर आप एक 17,000 का पूरा का workforce का 5% करेंगे, तो that's a huge number that will take eventually a time. But we are developing the process and also our infrastructure and everything around that. Get working on that. Thank you very much. I must appreciate. हमारे पास time तकरीबन is about to finish. मेरे साथ इस वक्त ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर फसील करीम सिद्दीकी, हमने उनको भी दावत दी थी कि वो ज्वाइन करें हमको, और ही हैज ज्वाइंड अस। सो मैं चाहूँगा कि आखिर में वो इसको वेबिनार को क्लोज करने के लिए इफ़ ही कैन अपनी राय से आगाह कर सकें, स्पेशली रिगार्डिंग विद दिस प्रिंसिपल कि जो हाउ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, एंड इसने सोसाइटी को कैसे हर्ट किया है और कितना हम कॉर्पोरेट साइड के ऊपर इसको अवॉइड कर सकते हैं और क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो ओवर टू यू मिस्टर फसील करीम सिद्दीकी, प्लीज गो अहेड नाउ। So first of all, I must congratulate the panelists for very rich sharing of their knowledge, experience on a very important subject which was discussed in today's webinar. I will not add much to it, but only would like to point out a couple of things. We know that there is discrimination. That's the first point. We have to admit that there is discrimination in terms of employment when it comes to keeping recruitment policy, which should be the right person for the right job with the right potential. But then when things are disbalanced, when you have a situation where it is obvious that there is gender imbalance, when it is obvious that there is disability imbalance,
When it is obvious that there is a number of people from the minority communities and the neglected areas are less, then there is something called affirmative action, which has to be planned by companies. It is important because that means positive discrimination. You may have to do a discrimination, but that will be a positive discrimination, making sure that you improve the number of people who are from the differently abled categories of the society, making sure that you have people from a more diverse regional background, making sure that you have more gender balance in the organization. इसके लिए company की policy होनी चाहिए. It may not happen, everything cannot happen in a day. But I think it is very important for companies to develop a policy and a plan of action. It can be gradual, but over a period of time, you must have a planning that we should have so much percentage of female in your organization. And then it is not only having a number of female in the organization, it is also important as to which positions you have female. Pharmaceutical companies normally have a lot of female. Garment industry has a lot of female employed, but most of them are in the lower categories of employment. Most of them are operators or teachers or helpers, and there is no planned approach to growing them to the senior organizational hierarchy of the organization. I know Interloop is one organization which is doing a lot of activities for improving women empowerment within the enterprise. And there are so many others who are doing singular actions for empowering women. But I think it needs a consistent policy making, planning, particularly in the HR policies of the company. We need to go for a mindset which is promoting female-friendly employment environment, which is promoting disability friendly environment. अभी जैसे आतिफ साहब ने कहा, when we make our buildings, do we make ramps for the disabled? ये हमारे ध्यान में भी नहीं होता है कि होना चाहिए. तो वो फिर अगर हमने किसी को रख लिया तो हम रैम्प बना रहे होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि we are not proactive, we are reactive. What we need is proactive policy making, proactive decision making. चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, चाहे वो वॉशरूम बनाना हो, उसके अंदर डिसेबल्ड के लिए आपने फैसिलिटी दे दी. और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए, जब ये मौजूद होगा तो आपको इस बात में भी हौसला मिलेगा कि वी शुड बी एबल टू हायर पीपल फ्रॉम द डिसेबल्ड. अच्छा, डिसेबल्ड के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि यू माइट नॉट गेट द राइट स्किल दैट यू वांट. नाउ द लॉ सेज यू शुड हैव 5% disabled in the province of Sindh. I think it is 3% in Punjab, it is 2% in Balochistan. Now, the percentage is all right, but if you are not able to hire for one or the other reason, disabled people in that ratio, it still allows you to apportion the equivalent amount of wage and deposit it in the disabled rehabilitation fund established by the government. We are already now pursuing with the government to allow companies to spend that amount
which a company may have to spend on paying wages to disabled people, and if they're not getting the competent skill in which they need those disabled people, to allow organizations to spend that amount in training and apprenticeship of those disabled people. And that could still be a way forward to ensure that the at least the minimum provision of law is being positively used for the rehabilitation of the disabled. तो मैं समझता हूँ कि forward looking progressive organizations, human resource managers, management has to come forward to formulate an integrated policy approach towards eliminating discrimination in employment and occupation. They should have a planned program, maybe a 5-year program or a 3-year program of how they would be converting the minimum required ratio of balancing the category of people who are normally ignored in employment, और उसके लिए तैयारी भी करें. I have seen, look at 𝗂𝗵𝐶 for example. They have a number of outlets which are completely being managed by differently abled people. That means they have the potential to do that. You only have to have the will to allow them to do so with some supervision if necessary. तो ये आपको भी प्लान करना पड़ेगा कि हम ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां हम डिसेबल्ड लोगों को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं. खास तौर पे आपके पास आईटी का इशू का जो डिपार्टमेंट है, आपके पास जो इनोवेटिव जॉब बहुत सारे ऐसे हैं जो disabled people are doing much better than their counterparts. तो ये एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके पास जो जॉब है उनमें से ऐसे कौन कौन से जॉब है जहां डिसेबल्ड कॉम्पिटेंसीज मौजूद है. उसके लिए यू कैन हैव पार्टनरशिप विद डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशंस विच आर, जैसे आतिफ शेख साहब का ये ऑर्गेनाइजेशन है. To cut short, I think the whole idea was that organizations like Artistic Millionaires or Interloop or in different other sectors, particularly large organizations, have a higher degree of responsibility on them to get the ball rolling, to set examples and to guide their counterpart, business and industry, to be more proactive in eliminating discrimination. And one thing is very clear, those organizations which are able to minimize discrimination and set ideal examples of giant steps in their organization, they are going to lead the industry anyway, because they are going to project themselves as the champions of social development in the sector that they are working for. And this is what your buyers are looking for. This is what your customers are looking for. It adds to your feather that you have a gender policy of promoting women to the higher positions, and that it is not only on paper, but that it is being followed and reflected in the working of the organization. These examples will set the motion rolling, and I think if there is a larger commitment from a wider range of organizations, this is going to seriously address the issue of elimination of discrimination. I must congratulate particularly the two companies which are represented on the panel for being more proactive and more progressive.
but I'm sure they will realize that there is a lot more to be done. There is a lot more to be planned and a lot more to be engaged for ensuring that the social dimensions of business get their rightful attention as you grow in terms of economic prosperity and environmental prosperity. Thank you very much. Thank you, Fazil Saab. And I must appreciate Ma'am Mehak and Ma'am Alia and Dr. Sahab to be participant in this webinar. And there are so many participants who joined us on this webinar. And I'm very positive कि इसने एक अच्छा हमें डिबेट को इमर्ज करने में हेल्प करी है और आपने टाइम दिया. And it was, we are not unable to pay for you, लेकिन सोसाइटी को आपने वापस किया है कुछ इंशाल्लाह, I'm sure. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का कि आपने अपना टाइम निकाला. तकरीबन कोई 1.5-2 घंटा हमें हो गया है. तो आपका शुक्रिया और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टाइम भी हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. आपका बहुत शुक्रिया. Okay. Shukriya, Akram Saab. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Adil Saab, thank you very much. Okay. Assalamu alaikum.